Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is a Hindu and Indian Express. So possibly we'll try to cover all the important news that has been reported on the day. And additionally, I'll be supplementing the news with some add-on information so that they can help you in prelims and mains examination. So let's get started. So today is 21st of December and these are the list of the topic for the day. The first is boosting coastal radar network. The second important topic is government to use AI for the welfare schemes. Third is laying the foundation for the faster growth. The second last topic is Nepal to hold fresh elections, and the last topic is US President elect introduce climate team. Right. So these are some of the important news that has been reported. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video. So without any further ado, let's get started. So the first news, that is boosting coastal radar network. This has been reported in the Hindu and talking about the relevance of this news. So this is important for your general studies paper 3, but they can ask you a directly question in the mains examination. And at the same time, radar and the coastal network is equally relevant for the prelims examinations. Now coming to the news that a joint effort are in the advanced stage to set up the coastal radar system in Maldives, म्यांमार और बांग्लादेश. सो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ली है कि इन तीनों कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके दे वुड बी सेटिंग द कोस्टल रडार स्टेशंस. नाउ एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स जो फर्दर इसको एक्सपैंड करनी है कोस्टल रडार चेन नेटवर्क को, उसका जो पूरा एम है दैट इज टू इनेबल द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ हाई सीज फॉर द ट्रेड. ठीक है, ऐसे जो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग थ्रेट्स होते हैं उसको मॉनिटर करना और हाउ टू टैकल इट, that is the main aim behind the coastal radar stations. Now it would be expanded to India's assistance for capacity building in the Indian Ocean territorial states. जो littoral states हैं Indian Oceans में, उन states को cover की जाएगी. So this states would be, I'll be showing a map as well. जो Indian Ocean में खास करके इंडिया की अगर specifically बात करें तो कुछ और जगह पे radar stations बनाए गए हैं that is working fine with India and that is boosting the radar station in the India itself. Now coming to the coastal radar chain network, अगर बात करें तो Mauritius, Seychelles and Sri Lanka, they are already being integrated into the country's coastal radar network. जो पूरी चेन नेटवर्क है उसमें ये तीन कंट्री पहले से इंटीग्रेटेड है. एंड सिमिलर प्लान आर देयर इन द पाइपलाइन विथ मालदीव्स, म्यांमार. तो इन दोनों कंट्री को भी इंक्लूड करने की बात की गई है. साथ के साथ डिस्कशन इज ऑल्सो ऑन विथ बांग्लादेश एंड थाईलैंड. So you can see all number of countries would be included and that would be forming a chain so that the entire radar network get boost in the Southeast Asia and basically जो भी Indian Ocean region के जो countries हैं उनके बीच में. Now coming to the India Coastal Radar Network, जैसे ICORNB कहते हैं. So these are some of the location where actually this has happening. So this is in the Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha. This is Andaman and Nicobar Island and somewhere in the parts of Gujarat also, right? So these are some of the Indian coastal ocean radar network where India as of now has been operating with all these stations. Now coming to the nodal agency, India has come up with a nodal agency after the 26/11 Mumbai terror attack. So India's Navy Information Management and Analysis Center, better known as IMAC, IMAC भी कहते हैं इसको, ये लोकेटेड है गुरुग्राम विच इज इन हरियाणा. सो यहाँ पे ये लोकेटेड है एंड इट इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर कलेक्टिंग द मैरीटाइम डेटा विथ ऑल इट्स फ्यूजन. जितने भी कलेक्शंस होते हैं डेटा के वो यहाँ पे इस एजेंसी के द्वारा, इस नोडल एजेंसी के द्वारा मेंटेन की जाती है. Now coming to the information exchange on the traffic, as a part of information exchange regarding the traffic अगर बात करें जितने भी high seas हैं तो Navy has been authorized by the government to conclude the white shipping agreements with 36 countries and 3 multilateral constructs. तो जो white shipping agreements होते हैं दो countries के बीच में agreement होती है जहाँ पे multilateral constructs या फिर जो exchange of traffic data हैं वो की जाती है. Now so far agreement की अगर बात करें तो with 22 countries world multilateral construct are there and of this 17 agreement and world multilateral construct have been operational. तो 17 और one multilateral जो construct है वो अभी operationalize है इंडिया में. Now coming to the creation of info fusion centers, because Navy जो है वहाँ पे the entire things has to be executed by Indian Navy.
तो एट इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन, जिसको IFC IOR भी कहते हैं, दिस पॉइंट इज अगेन वेरी रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट? सो विच इज मेंट टू प्रमोट मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, किस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी है या उसके डोमेन की जो स्पेसिफिक बातें हैं वो यहाँ से बताई जाती है. एंड 3 more इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिसर आर बी एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन सून. 3 और ऐसे जो ILO होंगे वो IFR IOR को ज्वाइन करेंगे. Now the ILO from France, Japan and USA have joined the center and additionally the officers have been delayed due to the COVID-19. और जो एडिशनल कंट्रीज के साथ लोगों को ज्वाइन करना है, उनके जो इंटरनेशनल लाइजनिंग ऑफिसर्स होते हैं, ILO होते हैं, दे वुड बी ज्वाइनिंग सून. दिस हैज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक. Now coming to the future plan, गवर्नमेंट की क्या प्लान है सारे कंट्रीज के साथ इंट्रीकेट करने के बाद, हाउ दिस वुड बी बेनिफिटिंग. तो अंडर जो फेज 1 है, द कोस्टल रडार चेन नेटवर्क फॉर द 46 कोस्टल रडार स्टेशन वुड हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्री कोस्ट लाइन. आई हैव शोन यू अ मैप एज वेल. तो कंट्री की जो पूरी कोस्ट लाइन है, दे वुड बी इंटीग्रेटिंग विद द एंटायर कोस्ट लाइन. And under the phase 2, the project which is currently underway, तो 33 static stations बनाए जाएंगे. 4 mobile station would be there that would be set up by the Coast Guard in the advanced stage of completions. So very soon, and possibly by an year, they would be completing this plan as well. So these are the future plan of the government of India. Now coming to the second topic, this is from the Indian Express. Government to use AI for the welfare schemes. The artificial intelligence is very significant and they can improve the quality of life, right? So this would be again relevant for your general studies paper 3, where we have a topic specifically mentioned that science and everyday life that help in the basic everyday life, and science and technology, they can boost it and improve the quality of standard of living. So it is important there itself, and AI as an technology is equally important for the prelims examination. So according to the Ministry of Electronics and Information Technology, जिसको MIT भी कहते हैं, it has started the consultation with other ministries and government department, ताकि किस तरह से जो artificial intelligence है, जो AI की technologies है, उसको implement किया जाए straight run services में, और government के जो भी welfare programs हैं, उसमें कैसे AI की algorithms को use किए जा सकते हैं. Now in October itself, the ministry has planned to seek the cabinet note for the use of AI implementation. जो मिनिस्ट्री है, IT मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने पहले कैबिनेट के लिए पास एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि इस तरह की AI इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोग्राम है उसको अप्रूवल मिले, बट कुछ देयर वाज नॉट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन अदर मिनिस्ट्रीज, तो कुछ बात नहीं बनने की वजह से दे हैव डिफर्ड इट, एंड बिकॉज ऑफ विच द प्लान वाज रेज सम ऑब्जेक्शंस. Now AI on trial basis पे इसको implement करने की बात की गई. They would be not instantly implementing in all ministries. So what Ministry of IT is doing, they would use AI on the trial basis, and this would be some welfare and scholarship program and the overseas, right? जो भी ओवरसीज स्कॉलर्स दिए जाते हैं PhD स्कॉलर्स को, या फिर इंडिया में भी बहुत ऐसे स्कॉलर्स हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो उन ओवरसीज स्कॉलर्स को फर्स्ट दे वुड स्टार्ट, एंड नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द AI वुड बी रिलीज्ड आफ्टर दैट. तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगी जो इंडिया में पैन इंडिया जितने भी बेनिफिशियरी प्रोग्राम है उसमें भी AI टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाएगा. Now the ministry has also held meeting with the industry on the use of AI to figure out किस तरह से जो इसकी पूरी implementation है प्लान उसको किसे create किया जा सकता है, so that it can also create some more job in terms of AI technology and other domains of the AI. अब बात करें, एक इवेंट हुई थी, वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन आवर डेली न्यूज एनालिसिस, दिस इज नोन एज रेस 2020. मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ये एक डेडिकेटेड समिट थी जहाँ पे AI टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी बातें कही गई थी, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज़ हिमसेल्फ सेड कि इन दिस मेथड वी वुड बी एम्पावरिंग एंड ईजी एक्सेसिबल टू AI. वी विल पॉसिबली ट्राई टू मेक एक्सेसिबिलिटी ऑफ AI टू ऑल, और इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट दैट टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली, राइट? बिकॉज इन अ टाइम देखा यह गया है कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के और भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस इंटैक्ट है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इफ गवर्नमेंट फॉर्म्स द नेशनल पॉलिसी दे वुड बी ऑल्सो हैविंग द पीनल. सो कुछ जो पीनल प्रोसेस हैं, जो पीनल पेनाल्टीज जो होंगी वो भी इंक्लूड होगी इसमें. नाउ द इंडस्ट्रीज हैज़ फ्लैग्ड अबाउट 150 jobs option in the AI that could be used as a workforce
टू पुट टुगेदर फॉर द बेटर यूज। तो इसके जो डोमेन्स हैं, इनके जो वर्टिकल्स होंगे उनको एक्सप्लोर किया जाएगा, एआई के जितने भी वर्टिकल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सके। Now coming to the committees on the AI, we have been forming with the several committees. So the Ministry of IT in July, they have constituted a committee on AI with various aspects such as building models, framework to use the technology and implement in the critical missions. Now the two committee has already looked into the ethical aspects कि किस तरह से AI के जो various uses है, reskilling है, and that workforce should be used better to understand the use of technology, right? Now coming to the other news, this is an editorial written by C. Rangarajan. He is a well-known economist in India and he is a former chairman of the Chief Executive Advisory Council, जो Chief Economic Advisory Council होती है, and he is a governor of RBI also, former governor of RBI. So he said how the laying foundation stone should be there so that the economy could have a faster recovery. A very good, a very analytical essay, basically editorial that has been written in today's newspaper. So you can definitely note some important part because this is going to help you in mains examination, right? And specifically talking about it relevant, it would be contributing in your general studies paper 3. So in a pandemic of novel coronavirus, literally mean that economy has come into a halt. और जो पूरे एक्शंस लिए जाने चाहिए थे, द एक्शन दैट हैज टेकन बाय द गवर्नमेंट, लाइक लॉकडाउन जो चीज़ें हुई हैं, उसकी सबसे ज़्यादा जो खामियाजा किसी को भुगतना पड़ा तो वो हमारे इकोनॉमी को, बिकॉज इकोनॉमी हैज़ बिन सीवियरली हिट बिकॉज ऑफ दिस। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसके बाद उसको विड्रॉ भी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, इट इज़ गेटिंग ग्रीन शूट्स, बट स्टिल इट विल टेक अनदर ईयर और टू टू कम इनटू द प्री कोविड लेवल्स. So this is very clear from the performance of the Indian economy in the Q1 and Q2 कि how the green shoots has already been seen. Q1 की अगर बात करें तो -23 नेगेटिव में इंडिया की ग्रोथ रही थी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस, एंड इट हैज डिक्लाइंड बाय 7.5% in the Q2. So a bit of improvement, gradually it would be improving in Q3 and Q4. Now performance in 2021 बात करें, we know that GDP numbers is for the first half in the 2021, और अगर बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो इट मेंटेन एटलीस्ट सेकेंड हाफ इन द 2021, और जो लेवल ऑफ प्रीवियस रहे अगर उसकी कॉन्ट्रैक्शन आप देखोगे तो दैट वाज अबाउट 7.7%. एंड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द जीडीपी एटलीस्ट इन द Q4 भी अगर होती है, Q3 में एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी अभी जो रेंज बताई गई है दैट इज 6 to 7% ओनली. And this is of course require a substantial pick in the government expenditure because government would be also coming with the budget. Budget is coming in 1st of February 2021. So government is taking in the consultation with the CII और FICCI जो है, ये कंसल्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, और FICCI जो है, ये दोनों के साथ गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रही है, इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन ले रही है ताकि जो पोस्ट कोविड रिकवरी हो वो कैसी होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी पेंडेमिक के बाद इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह की बजट दे आर गोइंग टू टेबल इन द पार्लियामेंट. ना परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अगर बात करें, जिस तरह से चीज़ें इंप्रूव हुई है ऑन दैट पार्ट, सम इंडिकेटर्स लाइक द कलेक्शन ऑफ GST, improved output in the coal, steel and cement, and positive growth in the manufacturing that is in October 2020 has pointed out for the better performance in the private sectors. Now we have some other segments such as economy में hospitality की अगर बात करें तो यहाँ पे रिकवरी अभी नहीं देखी गई है. I'm talking about hospitality, not hospitals, right? Hospitality में आपके होटल्स आते हैं, जितने भी ऐसे सर्विसेज हैं जो लाइक होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, दीज आर द सर्विसेज, एयरलाइंस भी, जो भी ऐसे लोग जो हॉस्पिटैलिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी रिकवरी अभी थोड़ी लेट होगी. और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये भी कहा है कि एस्टिमेटेड इकोनॉमी जो डिक्लाइन है दैट शुड बी बाय 10.3%, right? Now coming to the other part, that is what to expect in 2021-2022, because very soon India would be having a vaccine also. The official confirmation coming from the health minister that by January 2021 India would be somewhere starting its vaccination process, right? तो Indian economy grow at 8% by 2021. अगर ये ग्रो करती है तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, और ये एस्टिमेशन लगाई गई है कि हमारे को अगर प्री कोविड लेवल्स पे जाने हैं तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो 8% के आसपास होनी चाहिए, राइट? फॉर लाइक इट वाज देयर इन 2020, 19 and 20, and 2 years have taken to cancel the other
तो बात क्या हुआ कि जो जिस टाइम पे इकोनॉमी परफॉर्म कर रही थी 2019 में एंड वी आर इन 2021, सो द 2020 वॉट एवर परफॉर्मेंस वॉज अबाउट टू देम, ये एक्चुअल में हुई नहीं, और ये 2 साल एक्चुअल में इंडिया के परफॉर्मेंस को काउंट नहीं किया जाएगा बिकॉज they have cancelled the entire performance of India. So this would be imperative कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कम से कम 8% के आसपास से ग्रो करनी चाहिए आने वाले आगे 6 साल तक की. मैं आपको आगे बताऊंगा जो एक्सपर्ट की ओपिनियंस है. सो टॉकिंग अबाउट द मॉनिटरी पॉलिसी, अभी गवर्नमेंट के पास क्या मॉनिटरी पॉलिसी होनी चाहिए. सो दे हैव बीन एक्सट्रीमली एकोमोडेटिव. 3 मेजर एलिमेंट्स बताए गए हैं दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द मॉनिटरी पॉलिसी. फर्स्ट इज द रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों की वो कम की जाए, एंड दिस वुड बी चेंज इन द पॉलिसी रेट एज वेल. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी थ्रू वेरियस मेजर्स, जो भी लिक्विडिटी के जो तरीके हैं उस पर ध्यान देना. Regulatory changes such as moratorium. So moratorium is something which would be equally relevant, providing some relief to the customers. Now there are some substantial injection of liquidity into the system because RBI has taken some action where they have injected some of the liquidity in the market. And according to the recent मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है उसके मुताबिक, सो जो हमारी रिजर्व है, जो रिजर्व दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 15.3% at the end of November 2020. Now monetary supply is however 12.5% because of some injection of the liquidity, and they have excess of the forex reserve, right? Now coming to the fiscal initiative, government expenditure play a key role in the current situation. अभी जिस तरह से गवर्नमेंट अपने फिजिकल इनिशिएटिव पे जोर देगी या जो रोड मैप बनाएगी, that would be the deciding factor how the economy is going to revive. And in the second quarter 2021, there was a contraction in the sector by 12%. This is for 2020 to 2021, मतलब present years में. And the stimulus policy would provide the government with the expenditure that is expected to arrest the contraction of the momentum. जो प्रोसेस है that has to bring down in the fiscal deficit and it must also start. जो fiscal deficit है उसको कैसे कम किया जाए, and government has to gradually come up so that they can decrease the percentage of the fiscal deficit. और एक डिटेल इन्वेस्टमेंट प्लान की ज़रूरत है so that public sectors must have drawn the presented part and in the coming budget, because budget the 1st February को जो budget पेश होनी है 2021, this would be a very crucial segment which government has to play, and this would be deciding the roadmap for the post COVID economy recovery. Now coming to the growth and investment, a way out. So Indian economy in 2019 was around $2.7 trillion, and to achieve the target of $5 trillion we would need to grow by 9% for 6 years. अगर जो टारगेट रखी गई थी प्री कोविड से पहले कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है इंडिया को, तो उसको अगर टारगेट को चेज करना है तो वी नीड 9% ऑफ द ग्रोथ फॉर 6 ईयर. For 6 years is the time that would be requiring this. And this challenges before the economy, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना, and job and employment will come with the growth only, right? So this is something that is very important on the path of growth and investment. Now coming to the other news, that is Nepal to held a fresh election after the political crisis in the Nepal, the constitutional crisis that has arisen in Nepal. Finally the parliament is being dissolved by the president. So this is important for your general studies paper 2 in terms of IR section. Now the recent decision, Nepal president has dissolved the parliament on the request of the prime minister and its cabinet. So the president has cancelled the president ने कहा है कि 2 फेज में इलेक्शन होंगे. They would be conducting the election in 2 phases, first on the April, another on the May 10th, right? This is for 2021. So the dates are almost confirmed. They would be conducting the election on the same day. Now reasons for the parliament dissolve, क्या ऐसे कारण थे that has led to the dissolve of the Nepal parliament? So the prime minister has lost a majority in the parliamentary party, जो सेंट्रल कमिटी होती है और जो सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्टी होती है, उनमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो मेजॉरिटी है उसको लॉस की. एंड द मूव कम आफ्टर द वीक टेंशन बिटवीन द अपोजिशन दैट हैज बीन डिमांडिंग दैट कि जो प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज चेंज हिज स्टाइल ऑफ गवर्नेंस. So the performance and the governance is not up to the mark, and there was a lot of controversy that was going between the नेपाल की जो इंटरनल गवर्नेंस है, वहाँ के जो पार्लियामेंट है, खास करके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके PMOs हैं. सो दीज आर द प्रॉब्लम दैट हैज अराइजन, एंड दे सेड कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो
is not in the par with the democratic setup जो है उसके against है. This was the reason that has led to the majority loss हुई वहाँ पे prime minister की, and because of which the president has cancelled the entire parliament, right? So difficulty journeys, this is an infographic which will help you understand किस तरह से 2017 में KP Sharma Oli, he is a present prime minister, no more, because the parliament has already been abrogated. So this is like constitutional new constitution जब बनी थी नेपाल की, उसके बाद he was the first prime minister, एंड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इन्होंने मिल करके, जो प्रचंड जिसको कहते हैं, CAPN, ही इज अ चीफ ऑफ दैट, सो दे हैव फॉर्म्ड अ पार्टी. एंड इन जून 2020 amid the काला पानी डिस्प्यूट, प्रचंड कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, राइट. तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया, और जून जुलाई को फिर दिस टेंशन हैज़ एक्सकेलेटेड, because of which because of this reason only that has led the introduction of the constitutional council ordinance, and because of which the president has finally asked them that they would not be continuing with this government and they would hold a new election in the May and April. Now heavy cost for the election, because जो election होगी that would be costlier this time. After the COVID-19, this was the first country that would be going with elections. So costly exercise है, and the last cost was estimated around $475 million के आसपास. Now social media reports have compared, और एक्सपर्ट की ओपिनियन है कि जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस और अगर जो इलेक्शन के जो खर्च हैं अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, so this would be somewhere $670 million. So this would be too expensive for the country like Nepal, which has a lot of investment in terms of infrastructures and overall development for the country. Now talking about the other part on the economy crisis, almost 30 million log ऐसे हैं, they are affected by the economic crisis of COVID-19. And the recent World Bank projection said कि economy की जो recovery है that would be less than 1% by 2021. So this is what has been projected by World Bank की जो projection है उसके मुताबिक, और tourism is on the mainstay of the economy and it has been hit by hard because of the COVID-19. और खास करके इस टाइम पे नेपाल के जो एरिया में पॉपुलर क्लाइंबिंग सीजन्स होती है माउंट एवरेस्ट में, दैट हैज आल्सो बीन कैंसल्ड विद द लास्ट स्प्रिंग, right? So these were some of the important causes that has led to the economic recession of the country, and that substantially contribute to a lot in the Nepal GDP. Now coming to the last news, that is US President-elect introduces the climate team. So this is Joe Biden, who is the US President-elect. Still the controversy has been there between the Donald Trump and US President-elect that who is going to be there in the office. But finally, all the constitutional processes, he is the only president of the US. So we'll discuss that part on the other part of this video. Let's concentrate to the main news that this would be relevant for your General Studies paper 3. And the council has been formed, a team has been formed to look into the climate issues. So the US President-elect that has announced that would be a climate and energy team nominees. इन्होंने nominate किया, कुछ nominees दिए हैं, कुछ लोगों के nominations दिए हैं, and they would be forming the team. They would be prioritizing the energy, jobs and environment protection is the cornerstone of the economy plan. और जो वहाँ के अभी US elect हैं, that is Joe Biden, he said that the key members of the environment team would be included, and there would be no time to waste there would be no time to waste it because environment has already been deteriorated a lot. और पेरिस क्लाइमेट चेंज को वापस से इन्होंने they have signed, right, PCA, Paris Climate Agreement, they were signed by the US because Donald Trump has cancelled this agreement amid the other concern or other benefits of him personally. So this is something which US has taken a proactive role because US is also one of the key emitters of the carbon dioxide. So they definitely have a moral responsibility to come up with this type of decisions. Now coming to the change in approach, the shift that has been seen from the Donald Trump administration and the present government. So they are basically trying to come up with all the processes that was being blocking the current administration. वहाँ की जो जिस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, their main aim is to boost the oil and gas productions, right? And because of which there were adverse consequences in terms of environment. So the present incumbent government, he choose an agenda that there should be something that is very necessary, that would be improving our environment, protecting the environment, looking into the low income countries, working class, minority communities, so that the fossil fuel and pollution is again the big concern for the country like USA. Now there will also be emphasis putting out for the low income countries, minority communities that are hit hard by the pollution of the climate change. Right, so this point has been repeated, you can skip this point.
So these are some of the important concerns that US has raised, and at the same time, it is relevant that a country like USA is taking a proactive role. India also definitely need to have its NDA, जो हमारी NDC थी, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए इंडिया ने जो टारगेट दी है वो 2025 से 2030 तक दी है. So this would be very important that we equally chase our target and achieve whatever we have promised. Now coming to the MCQs question of the day, the first question is coming from the geography. With regards to earthquake, consider the following statement. The tectonic type of the earthquake is generated due to sliding of rock along the fault plane, and the point from where earth or energy is released is called epicenter. So the correct option you have to choose A, B, C, D, whichever you feel is the correct answer. You can let us know in the comment section down below. The second question is from general science. With regards to generic drug, consider the following statement. Generic medicine work in the same way and it provides same clinical benefits to the brand name, and generic drugs cost less than the brand name. So you have to just let me know which among the following is the correct option. And if you have any additional information regarding the generic drug, you can share that also with us in the comment section down below. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.